Hello children, today we are going to do part B of this chapter number 10, organs of the government, and in this section we will do short notes. So the first question is position of the governor and his function. You have to write short note on the function of the governor and position. So the answer is the governor is the constitutional and formal head of the state. All executive powers of a state government are vested on him. He appoints the CM who has a clear majority. He also appoints the Council of Ministers on the advice of CM. CM means Chief Ministers. Okay. He appoints the Advocate General, the chairman, the member of the State Public Service Commission. He is consulted by the President of India for the appointment of Judge of the High Court. The position of the governor in a state is similar to that of the president. मतलब स्टेट में गवर्नर का जो पोजीशन है उसी तरीके से जैसे कंट्री में प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो सिमिलर है एट द सेंटर. हिज पावर आर एक्चुअली exercised by council of minister headed by the chief minister, but the governor can exercise certain powers independently also. Normally the governor of the state is ex officio chancellor of all the universities of the state. A governor can belong to any political party, but after assuming his post the governor has to perform his duties formally and impartially. ठीक है, तो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं बट एज अ गवर्नर अपॉइंट होने के बाद वो बिना किसी भेदभाव के अपना काम करेंगे, किसी पार्टी को पर्सनली सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक ऑफिशियली उनको जो भी सही लगे या गलत लगे उस पार्टी को वो वोट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोजीशन एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अब हमें प्राइम मिनिस्टर के पावर्स को बताना है. द आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. रियल में प्राइम मिनिस्टर ही सारा कुछ हेड करते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द पार्टी हु हैज़ अचीव अ मेजोरिटी इन द जनरल इलेक्शन. ही इज अपॉइंटेड फॉर्मली बाय द president. The minister to the cabinet are appointed as per the council of the prime minister. He distributes the portfolio. Any minister either to be taken, left or continued in the cabinet is decided by the prime minister. He presides over the meeting of the cabinet and also look after the functioning of various departments of the cabinet. He takes pivotal decision. The PM is the head of the planning commission, which is known as policy commission. The PM should be a member of any one house of the parliament. The ministers are individually responsible for their ministries and departments. The council of ministers is collectively responsible and accountable to the Lok Sabha. If the Lok Sabha rejects the policy of government on a particular issue, it is only the responsible minister for that subject, but the whole council of ministers must accept the responsibility and resign. तो डियर यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है, सेक्शन में हमारे सारे कंप्लीट होते हैं. आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस जो भी हमारे सेक्शंस हुए इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए होंगे नोटबुक में, और अगर नहीं भी किए हैं तो जल्दी करके इस सेक्शन के साथ चैप्टर को कंप्लीट करिए. और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 18 जो कि है वाइल्ड लाइफ. ओके, थैंक यू.